Good afternoon, Yash and Satyajit. Very good afternoon, Riyansh, Mahi, and Pranav. Okay, I'm sharing the attendance link, beta. Put your attendance. I've shared the attendance link. Okay, Pranav done, Sharvari done, Pranjali done. Good, that's nice. Okay, so let's begin our today's class. I'm going to ask you few questions which you will be answering me through the chat box. Okay? You have to identify something about which I'm to give you some clues. Okay? The first clue is it is a fruit used for medicines. First clue is this, okay? It is a fruit. It can be dry or it can be, कच्चा भी हो सकता है. But it is used for medicines. It is also used in variety of cooking. It is also used in variety of cooking. The taste is little sweet and sour. The taste is little sweet and sour. उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा मीठा है और जिसे देख के हमारे मुंह में पानी जरूर आता है. Yes, very good. Started giving answer. Tamarind, tamarind, imli. Yes, absolutely correct. Imli, tamarind. We are going to talk about
a tamarind tree. Okay, we are going to recite a poem, and the poem's name is The Tamarind Tree. One more question I want to ask you. Nowadays, what people are doing, they are cutting lot of trees to build factories, to build new house, to build malls, and lot of industrial activities are going on. For that, the people, they cut lot of trees. आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके गांव का या आपके घर के पास का, नियर टू योर होम, कि जहां पे सालों से कोई बहुत बड़ा पेड़ हो और उसे अभी काट दिया गया हो? किसी के पास ऐसा कोई कोई भी ऐसा कोई वाक्य है, कोई भी ऐसा कोई इंसिडेंट है जो आपको पता हो कि आपके घर के पास में या गांव में बहुत बड़ा पेड़ हो जो अभी काट दिया गया हो, तो उसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है वहां? कैन एनीवन? ओके, Pranjali is writing yes ma'am. Okay, Pranav also knows. Fine, very good. So, when we are cutting an old tree, उस पेड़ पे आप सोचिए कितने पक्षियों का घर होगा, है ना? बट वेन वी कट दैट ट्री, we are also destroying their homes. Okay, Yash has written the neem tree was cut down some days before. Okay, so Yash, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जब वो नीम ट्री वहां से काट दिया गया, तो क्या आपको कुछ चेंजेस लगे वहां पे? एनी चेंज इन दैट एरिया? डिड यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दैट एरिया? सबसे पहले तो क्या हुआ होगा? सबसे पहले तो ये हुआ होगा कि उस पेड़ के नीचे जो आने जाने वाले लोग हैं, जो कि छांव की तलाश में उस पेड़ के नीचे बैठते होंगे, वो छांव चला गया, राइट? द शेड द नीम ट्री यूज्ड टू गिव, we have lost that shade. Okay, yes ma'am, there is no crow and sparrows. Yes, very good answer. कि जो पशु पक्षियां उस पेड़ के नीचे आराम करते थे, जो बर्ड्स उस पेड़ में अपने घर बनाए होंगे, जिन्होंने अपने घर बनाए होंगे, द नेस्ट ऑफ द बर्ड्स, दैट ऑल्सो इज डिस्ट्रॉयड. तो हमारे लिए तो वो प्रॉब्लम हुआ ही कि शेड चला गया, जो अच्छी ठंडी हवा आती थी वो मिलना बंद हो गया. द फ्रेश एयर विच द पीपल यूज टू गेट फ्रॉम दैट नीम ट्री, नाउ द पीपल आर नॉट गेटिंग दैट फ्रेश एयर, छाव, द शेड ऑफ द ट्री, है ना? सो देर आर सो मेनी लॉस व्हेन वी आर कटिंग द ट्री. यस, नो बर्ड्स चिर्पिंग साउंड, एब्सोल्युटली करेक्ट. जो बर्ड्स की जो सुबह उठते ही वो जो चहचहाहट थी उस पेड़ पे, वो चला गया. सो लॉट ऑफ लॉस. So if for any reason we are cutting any tree, maybe it is causing some damage to our home, or it is creating lot of rubbish or garbage near your home, that is also a problem. But when you are cutting the tree, after that what you should do? You should plant a new tree, right? You should do
another tree plantation somewhere else जहां पे आपको कोई डैमेज ना हो या आपके घर को कोई डैमेज ना हो. That we can do. So our today's poem is related to the tamarind tree. Okay, so I request everyone to kindly open page number 106. Kindly open page number 106. Are you ready? If you're ready, then kindly type yes or kindly write R in the chat box. If you're ready with page number 106, if you are ready with page number 106, then kindly type R or yes in the chat box. So I hope everybody of you have submitted your attendance. Anyone left who did not submit the attendance till now? Anyone left who didn't submit the attendance link, attendance till now? Yes. Who doesn't love a tree? We all love trees because it gives us shade, it gives us fresh air, it gives us fruits, flowers, and shelters to many birds and animals. But our trees are also threatened by the progress. The progress, what we are doing, building new malls, building big buildings, cutting the trees to build our beautiful home. जितना प्रोग्रेस हम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? We are destroying our environment as well. Right? So let us begin. Page number 102, poem The Tamarind Tree. Nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane. किसी को नहीं पता है कि मेरा जो tamarind tree है वो कहाँ खड़ा था. Just by a winding lane. Winding means teda, not straight. Lane याने रास्ता. Okay. The meaning of lane, meaning of winding is already given in the meaning, which is curving or not straight. That means वो जो रास्ता था जहां पे वो tamarind ट्री खड़ा था वो स्ट्रेट नहीं था. इट वॉज कर्व्ड. ओके, इट वॉज कर्व्ड. Nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane. Each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again. Here the meaning of drew me, kindly underline, the meaning of drew me is also already given, called me. That means the boy is staying somewhere else. But वो tamarind की खुशबू, वो tamarind tree मुझे हर साल अपने पास बुला लेता था. Okay, drew me means called me, bulana. The meaning of drew me is to call me. The tamarind tree used to call me that come beta come and have my fruit. Take rest under me. Okay? And you can take the fresh air. Nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane. Each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again. और मुझे फिर से अपने घर पे वो बुलाता. I loved to sit beneath her shady boughs,
The meaning of bows over here is the branches of the tamarind tree. So I loved, the child loved to sit beneath her shady boughs. Beneath means under. The meaning of beneath is under the shady boughs. Boughs का मतलब होता है branches of the trees. जो ट्री के जो छोटी छोटी शाखाएं निकलती है ना, वो. And rest up for a while, to gaze out upon the distant blue hills with laughter and a smile. और उस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के I used to look steadily to the green hills. To gaze mean to look steadily, यानी कि एक टक उस हरे पहाड़ के तरफ देखना, एक टक देखना. दैट मीन्स टू वॉच कंटिन्यूअसली टू द डिस्टेंट ब्लू हिल्स. डिस्टेंट का मतलब जो है बहुत दूर, फार फार अवे. So the child was sitting under the tamarind tree and was watching the blue hills with laughter and smile. खुशी से हंसते हुए उस इमली के पेड़ के नीचे बैठकर आनंद ले रहे थे. किसको देखते हुए? ब्लू हिल्स को देखते हुए. And now that I am back, जैसे हम हमारे गांव को छोड़ के शहर में आ गए हैं, है ना, पढ़ाई के लिए, पापा के काम के लिए, मम्मी के जॉब के लिए. ठीक उसी तरह से वो जो बच्चा है उस पोयम में, वो भी गांव के वातावरण को, गांव के एनवायरनमेंट को छोड़ के कहीं और रहता है. बट नाउ ही इज बैक, द चाइल्ड इज बैक. I am eager to find my tamarind again. And he is very eager, very anxious to search his tamarind tree. I hasten down to that favorite spot. I search, but search in vain. The meaning of hasten here is hurry up, jaldi jaldi karna, rush. कि वो जल्दी जल्दी आसपास में वो ढूंढ रहा है कि मेरा वो टैमरिंड ट्री कहाँ पे है. वेयर इज माई टैमरिंड ट्री? Where is my tamarind tree? But he searched and searched, but couldn't find the tamarind tree. उसे वो tamarind tree नहीं मिला. His all search was in vain. यानी कि बेकार में ही वो ढूंढ रहा है. It is all in vain, useless. वो जो मेहनत कर रहा है वो tamarind tree को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वो tamarind tree नहीं मिल रहा है. Then I stopped and I stared. I stand quiet. Still I listen to my heart. That magnificent tree that was my life has just been ripped apart. The child says, मैं रुका और मैंने स्टेयर किया, यानी कि एक ही ध्यान से, ध्यान लगाते हुए मैंने देखा, एक ही जगह पे देखा और अपने दिल से पूछा. I asked to my heart, I listened to my heart. मैंने अपनी दिल की सुनी. That magnificent tree, कि वो बड़ा सा, very grand and big tamarind tree, जो कि मेरी पूरी जिंदगी थी, that was my whole life.
has just been ripped apart, यानी उसे किसी ने खींच के निकाल दिया, अलग कर दिया जमीन से, pulled up and thrown it away. I turned to the hills, up eyes filled with tears. और जैसे ही मैंने देखा कि मेरा जो टैमरिन ट्री है उसको किसी से जमीन से निकाल के फेंक दिया था, तो वो देख के मेरे आंखों से आंसू आने लगा. माई आईज वेर फिल्ड विथ टीयर्स. फॉर श्योर आई हैव लॉस्ट माई सॉल. मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे शरीर का कोई पार्ट निकाल के फेंक दिया हो. दीज आर द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड. ये जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको पूछा था कि आपके घर के पास में अगर कोई ट्री था और वो किसी ने काट दिया हो, तो अभी कैसा आपको लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग और व्हाट इज हैपनिंग ओवर दैट. दीज आर द फीलिंग्स ऑफ दैट चाइल्ड. उसे कैसे फील हो रहा है. सो ही सेज कि मुझे लग रहा है कि मेरी आत्मा कहीं पे चली गई, कि जैसे कि मेरे शरीर का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा किसी ने खींच के निकाल दिया. Where once it stood tall, there's nothing there now, merely an empty hole. और जिस जगह पे मेरा टैमरिन ट्री था, अब वहां पे सिर्फ एक गड्ढा रह गया है, क्योंकि किसी ने मेरे ट्री को निकाल के फेंक दिया. रिप्ड अपार्ट, पुल्ड इट एंड cut it away or threw it away. So, from this poem, we can understand the feeling of that child, how he felt when he couldn't find his tamarind tree. Okay? So, you can ask द सेम क्वेश्चंस टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने गांव से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं. सो यू कैन आस्क टू योर ग्रैंड माँ, टू योर ग्रैंड पा, दैट कि जब आपके घर के पास में ऐसा कोई पेड़ था या आपके गांव में कोई ऐसा बहुत बड़ा पेड़ था और उसके चले जाने के बाद क्या क्या हुआ, उस पेड़ को क्यों काटा गया. You can ask all these questions to your grandparents and to your parents. Okay. So we will read, we will recite the poem. Okay, dear children. I think you have understood the meaning of the poem. Now we will go with the recitation part. Nobody knows where my tamarind stood. And you also have to recite this poem and make a video and send it to me. Okay? When you're reciting the poem, your poem should have that feeling of the child. आपको वो जो फीलिंग है आपके रेसिटेशन में लाना पड़ेगा, वो दर्द, वो दुख. ओके, द सैडनेस ऑफ दैट चाइल्ड यू हैव टू फील इन यू व्हेन यू आर रिसाइटिंग द पोएम. So nobody knows where my tamarind stood, just by a winding lane. Each year it gave me fruit and shade and drew me to my home again. So here you can find two rhyming words. Can you write down the two rhyming words in your chat box? Can you identify the two rhyming words in the chat box and write it down?
From the first paragraph, yes, absolutely correct. Lane and again. Lane and again. I loved to sit beneath her shady boughs and rest up for a while, to gaze out upon the distant blue hills with laughter and a smile. And now that I am back, I'm eager to find my tamarind again. I hastened down to that favorite spot. I searched, but searched in vain. Then I stopped and stared. I stand quite still, I listen to my heart. That magnificent tree that was my life has just ripped apart. Now, in the second paragraph, kindly find the two rhyming words from the second paragraph. Kindly write the two rhyming words from the second paragraph. Anyone? Yes. Very good. While and smile. Now, in the third paragraph, from the third paragraph, yes. Again, vain. Again, vain. Now, from the fourth paragraph, heart apart. Heart apart. I turned to the hills, my eyes filled with tears. For sure, I lost my soul. Where once it stood tall, there's nothing there now, merely an empty hole. Yes, soul and hole. Two rhyming words. So I'll be sharing the link of this video in the WhatsApp group. You can see the video and write the question answers of this poem in the notebook of this poem. Now I want to ask you one question. In our reading class that day, we read a story. What was the name of the story? What's Nima eating today? Right? How many of you have read that story at home? How many of you have read that story at home? How many of you have read that story at home? Okay, Yash, Anvesha, Sparsh, Rayansh, Pranav. Only six students? Only six students have read the story? Why not others? Hmm? Why not others? Okay, Adhiraj also. And Ansh, Prapti. What about others, beta?
You have to read this story. Okay? Why we are sharing this story to you? So that you can develop your reading skill, so that you can read properly with a appropriate speed, with proper pause. जैसे कि मैंने बताया था, कॉमा और फुल स्टॉप जब आता है तो हमें थोड़ी देर के लिए वहां पे रुकना है फॉर अ सेकेंड. So this is for you, my dear children, not for me. Okay? Make it a practice. Whatever stories I'll be sharing to you in your group, you have to read it. So in our last class, like we completed the reading for 8 students. Next week, again, when I'll be taking the reading class, another 8 students will be getting the chance. In this way, all the students will be getting the chance to read in the class. Okay? So your today's work is make the poem recitation video of the tamarind tree and you will be sending it to me. Okay? So your today's work is you will make the video of this poem, the tamarind tree, and send it to me. All of you have done your attendance, beta. सभी ने अपना attendance डाल दिया है? Okay, that's great. So I'm winding up today's class here. Thank you very much. Take care. Bye bye.